अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, माय नेम सोहेब इकराम एंड सोहेब टॉक्स नंबर 2 में खुशामदीद। तो यार पिछले कुछ सालों में हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में ही एक बहुत कंसिस्टेंट राइज़ देखा गया है इन द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स एंड इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। मेनली ये कि जब हमारा 2020-2021 में कोविड-19 का पैंडेमिक आया, उसकी वजह से बहुत से लोग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाना शुरू हुए टू कॉमन प्रॉब्लम्स एंड इसकी वजह से एक इनोवेशन की सर्ज आई जिसने ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट किया। और ना सिर्फ ऑन द क्रिएटर साइड बट ऑन द इन्वेस्टर साइड एज वेल। जैसे जैसे कोविड-19 बढ़ता चला गया, इन्वेस्टर्स की ऑप्शंस चेंज होती गई इन वेयर दे कैन इन्वेस्ट। और उस वक्त ये स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ भी रहा था और इसकी डिमांड भी बढ़ रही थी, तो इन्वेस्टर्स ने अपना फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स मोर टेक स्टार्टअप्स। वाइल येस, बहुत सालों से पाकिस्तान और दुनिया भर में टेक स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा फंड्स भी रेस करते आए हैं और बहुत सक्सेस भी फेस करते आए हैं, लेकिन स्पेशली इन द लास्ट कपल ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है इन द अमाउंट्स ऑफ फंड्स रेज्ड इन टेक स्टार्टअप्स एंड स्पेशली इन पाकिस्तान, कंसिडरिंग कि सिर्फ 2021 में $328 मिलियन रेज किया गया पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में। और इसके पीछे वजूहात यही हैं कि हमारी कंट्री इस वक्त इट्स राइप विद अपॉर्चुनिटी एंड any new or any innovative idea that might be working anywhere in the world has potential in Pakistan as of right now। और इसी चीज़ को पिछले कुछ सालों में बहुत से स्टार्टअप्स ने इस चीज़ के ऊपर कैपिटलाइज किया, बहुत से अब तक कर रहे हैं, बहुत सारे सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी हैं जो सक्सेस की तरफ जा रही थी लेकिन they fell short somehow, and one of those stories is the story of Airlift in Pakistan। Now everyone knows that at its peak, Airlift was the best, quick commerce grocery delivery service. But that's not how they started. Initially, as a lot of you might know, Airlift started as a transport company, and their whole model was a decentralized transport system. Basically, ये public transport को replace करने की कोशिश थी through technology and through subsidized rate, to the point कि यार you could I actually know people जो पूरा लाहौर शहर from their home to their work and back at a fraction of the cost, मतलब कि 100 रुपये में आपका जो है वो घर से आप ऑफिस आ रहे हो और वापस आ रहे हो, और in air conditioned buses, and the service was excellent at that point in time. It was needed क्योंकि करीम का उस वक्त राइज था एंड उनके रेट्स बढ़ भी रहे थे, राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस एंड all these factors were contributing to high cost of commute for people who work or people who study generally in these big cities. And Airlift came as a revolution, and they said, you know what, we're going to decentralize public transport and we're going to have our own system where we have these vans and buses which are of the highest quality, और वो आपको अच्छे रेट्स पे ट्रांसपोर्ट ऑफर कर रहे थे। And then COVID-19 happened, which will go down in the history books as one of the biggest change factor of this decade or the last decade, and it caused a lot of changes. Public transport khatam, and general need for public transport or any kind of transport really went out the window. And what Airlift did, they probably made an extremely smart move at the time, and that was to move towards quick commerce and grocery delivery. सब घर बैठे हुए थे and no one was going out for fear of COVID, और उस वक्त इतने unknowns थे, and it was the right time, they were at the right place, and they started this quick commerce thing. Now keep in mind, at that time they weren't the only ones. मतलब उस वक्त भी कुछ competitors थे जो आज भी हैं। चीते is still pretty much active. अब तो क्रेव मार्ट और पांडा मार्ट भी इसके अंदर एक बड़े प्लेयर्स की तरह एंटर हो गए हैं, लेकिन at that point in time they were doing 10,000 orders per day, and the service itself that they brought in was extraordinary. मतलब क्विक डिलीवरी, सबसे पहली बात तो ये कि यार 30 मिनट में आप बैठे हो, आपको ग्रोसरी डिलीवर हो जाती है। 500 रुपये से ऊपर का ऑर्डर है तो आपके डिलीवरी चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं। और इनकी इन्वेंट्री वॉज सो ह्यूज, मतलब कि टू दिस डे आई कैन नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट आई यूज्ड टू बाय फ्रॉम एयरलिफ्ट
इन एनी ऑफ देयर कंपेटिटर्स. मतलब कि चीते के पास इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम है या ना होने के बराबर है, पांडा मार्ट पे फिर थोड़े बहुत हैं. स्टेशनरी अच्छी नहीं मिलती चीते पांडा मार्ट पे, बहुत बहुत लिमिटेड है. बट देयर इन्वेंट्री वॉज इमेंस. मतलब कि एनी थिंग यू कैन थिंक ऑफ दे हैड इट एंड इन द बेस्ट क्वालिटी. और डिलीवरी टाइम वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली देयर ऐप वॉज अ डिलाइट. मतलब usage was so simple, the interfaces were fluid, it did not require any complicated learning. Anyone could just pick it up and naturally use it. It was a thing of beauty, honestly. And you notice that I am still a huge fan of Airlift at its height, because what they were delivering at the time was unprecedented. And even to this date, I believe the current quick commerce companies out there who are doing grocery delivery, they do not hold a candle to what Airlift was at its prime, which was an extraordinary service. But having said that, this might be again an unpopular opinion, because not everyone had that same experience with Airlift. I was ordering 2 to 3 times a day because it was just incredible and we were all stuck at home anyway. But turns out that was not the case for everyone. And everyone knows that Airlift eventually shut down. And let's just dive into why that happened. There are a couple of reasons that are very they're important for us to know as people who work, क्योंकि उसमें बहुत learning है. एक startup जो कि at its height went up to $109 million in raised funds suddenly closes its door. So something drastic must have happened to have led to this moment. But considering कि उनका Series B round was also over $80 million. So what really went wrong at Airlift and why they fell so hard in such a small amount of time? The first reason that I believe led to their decline and ultimate demise was the quick commerce model in itself. अब इसका समझने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि Airlift आपको 30 मिनट में डिलीवरी कैसे दे रहा है. इमेजिन करें कि आप एक शॉप ओनर है, ठीक है, आपके पास ऑर्डर आता है. अब आपके मोहल्ले का ऑर्डर है तो आप तो उसको 20 मिनट में डिलीवर कर सकते हैं. लेकिन आपको ऑर्डर आ गया है 10 किलोमीटर दूर का, यू कैन डिलीवर दैट विद इन 30 मिनट्स, राइट. तो इसमें फिर कॉन्सेप्ट आता है डार्क स्टोर्स का, कि यार आपका मेन स्टोर है एक, और फिर आपने डिफरेंट लोकेलिटीज़ में छोटे छोटे स्टोर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप कुछ माल डालते रहते हो बेस्ड ऑन डिमांड. कि यार देखा कि अच्छा ये इस एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी डिमांड नहीं है लेकिन दूध रोज़ बिकता है, तो यहाँ दूध थोड़ा सा डाल दो, यहाँ थोड़ा सा मतलब कि ड्रिंक्स डाल दो, जंक फूड डाल दो. बल्कि जो भी उनकी सारी कैटेगरीज थी वो बेस्ड ऑन डिमांड अपने छोटे छोटे डार्क स्टोर्स में डालते चले गए. नाउ देयर कम्स अ पॉइंट वेयर इट गेट्स ओवरवेलमिंग. कि इमेजिन कि एक सिटी को केटर करने के लिए आपको 10-20 डार्क स्टोर्स ऑपरेट करने हैं. एंड यूर नॉट ओनली इन वन सिटी, यूर नॉट इन लाहौर, मतलब कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ मतलब के शहरों में हैं, प्लस इंटरनेशनली भी हैं. तो इमेजिन द sheer स्केल दैट यू वर ऑपरेटिंग ऑन एट सच अ यंग मतलब के time in your company's life. The company was barely a couple of years old and you already had dozens of stores, not just in your own country but in other countries as well. So the fact that you have to have so many stores in order to ensure that you deliver in 30 minutes is a problem in itself. अक्सर ये होता है कि यार एक दूर दराज का लेट्स से एरिया है लाहौर का, मे बी मैं कहता हूँ कोई दूर का एरिया जहाँ पे इतनी आबादी नहीं है, लेकिन वहाँ से आपको एक ऑर्डर आता है. अब आप उस एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए इन दैट 30 मिनट प्रॉमिस्ड विंडो यू हैव टू बिल्ड मतलब कि 100 रुपये का ऑर्डर है, उसके फुलफिलमेंट के लिए आपको 1000 रुपये का डार्क स्टोर डालना पड़ रहा है. तो इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर डार्क स्टोर्स आर एक्सट्रीमली कैश बर्न मतलब के बेस्ड, के यू बर्न सो मच कैश टू मेंटेन दैट 30 मिनट विंडो दैट इवेंचुअली इट डजंट मेक सेंस प्रॉफिटेबली. And that's one of the reasons why the quick commerce model in itself is inherently flawed. कि आपके retail में margins इतने low होते हैं on these grocery items and these retail items कि वो profits justify ही नहीं करते कि आपने इतने महंगे dark stores डाले हुए जिनके अंदर माल भरा हुआ है. Now Airlift, I know for a fact that for a long time they were saying that हमारे retail के margins अच्छे हैं because of bulk buying, and I'm sure that was true. But that profit against that cash burn, it takes years to get to a point जहाँ पे आपका cash burn जो है वो profitability में turn हो जाता है. And
which is why, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कैश बर्न था, तो एयरलिफ्ट वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट. They were dependent on outside investments and multiple rounds of investments to create a runway. मतलब कि जब आपकी कंपनी खुद प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन आपने सर्वाइव करना है, तो आप बेसिकली रनवेज बिल्ड करते हो. नाउ रनवे का मतलब ये कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं सर्वाइव करने के लिए, कितने महीनों का रनवे आपके पास है. अब आपने लेट्स से एक इन्वेस्टमेंट राउंड रेस किया, नाउ यू हैव इनफ इन्वेस्टमेंट टू सर्वाइव फॉर 6 months. 80% आपने अपना जो मतलब 30-40% आपने पैसे एक्सपेंशन में लगा दिए, बाकी 40% आपने रनवे बनाने में लगा दिए, और मल्टीपल एक्सपेंसेस में आपने अपने पैसे डिवाइड कर दिए. रनवे आपका बना हुआ है, जब वो रनवे खत्म होगा तो आपने दोबारा फंड्स रेज करने हैं, बिकॉज आप प्रॉफिट जनरेट तो नहीं कर रहे, आप तो कैश बर्न कर रहे हो. And that is where the biggest problem for Airlift happened, was that their runway dried out. They were expecting funds from their Series B round जो 80 million plus का हुआ था, and due to international turmoil in terms of the economy, the global economy, और उसकी वजह से बहुत सारे investors started backing out of these startup deals, and even people who committed to take part in this Series B round, जिनके बेस पे उन्होंने अपना ये फिगर बताया कि हमने 80 million कर लिया, even some of those people started backing out and payments stopped coming through. Now at that point, imagine yourself as a decision maker in a startup, and you're thinking कि यार अच्छा अब मेरे पास ये पैसे आ रहे हैं and I'm gonna have enough to survive for a year, and then suddenly you find out कि अबे यार ये तो पैसे ही नहीं आ रहे, and what do? You try to extend certain credit lines, and that's what they did. They tried to go for a bridge round, and they tried to raise funds otherwise, but by that time it was their runway dried out, and it resulted to them having to close down. पहले initially उन्होंने कुछ महीने अपनी operations बंद करना शुरू किए कुछ जगहों से, profitability दिखाने के लिए कि यार we can be self-reliant, and which would increase investor confidence obviously at the end of the day कि profitability दिखानी है. So they started shutting down all these operations out of Pakistan and in many of the cities, but it was during this time that it was apparent that they were going towards an ultimate demise, because the quality of service declined so much कि order आने में 2-2 घंटे लग रहे हैं. I faced that myself. Order आने में 2-2 घंटे लग रहे हैं, चीज़ें near expiry या expired आ रही हैं, and it was just inevitable क्योंकि it was all chaos, I believe, in the last couple of months, and I can sincerely sympathize with a company that has to change their entire model overnight to show profitability, and because that's not how it has always been. मतलब कि आप बहुत सारी मिसालें ले लें, Careem being one of them. For a long time Careem was not profitable, and बहुत साल इन्होंने यही रनवेज क्रिएट करके मज़ीद राउंड शो करके ये सर्वाइव करते रहे. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिर सवाल एक उठता है कि यार हाउ डू यू देन रेज मनी फॉर योर नेक्स्ट राउंड व्हेन यू आर नॉट प्रॉफिटेबल. तो यहाँ पे दिखाया बेसिकली जाता है कि आपका टर्नओवर या रेवेन्यू या GMV कितना है. अब चीते के केस में चीता कह रहा हूँ, एयरलिफ्ट के केस में ये था कि टर्नओवर तो मिलियंस में था, लेकिन उसके पीछे एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा थे. लेकिन इन्वेस्टर को जब आप दिखा रहे हो यार कि हमने इतनी एक्सपेंशन कर दी, हमारा GMV फलाने $1 million है, और मतलब उसके ऊपर हमने 20-30% 40% ग्रोथ फैक्टर भी लगाया है ईयर ऑन ईयर, तो इन्वेस्टर तो कहेगा यार दे आर ऑन द राइट ट्रैक, दे आर शोइंग पॉजिटिव साइंस ऑफ मतलब के ग्रोथ, एंड देव गॉट सच अ ह्यूज GMV, आई वुड वांट टू इन्वेस्ट. तो that's just how it's been for startups for a long time, that they show growth and they get investments up to the point कि यार वो growth catches up with profitability and certain unit economics के उनको फिर profitability आना शुरू हो जाती है. लेकिन unfortunately before Airlift could make it to that point, there was a shift in investor requirements, क्योंकि globally एक lack of confidence आ रहा था in this specific tech ecosystem and startup ecosystem, and it just didn't work out for them. And also, like I mentioned, that the sheer scale of what they were achieving and they were doing, you can only imagine that there would have been 1,000 operational problems. क्योंकि how much stock, you can only imagine कि उनका stock कितना बड़ा होगा in every of these dark stores, and the management of all of these SKUs down to the point कि वो expire कब हो रहे हैं requires so much precision that it is
near impossible to achieve for a startup that is that young. And again, that is also because of your scale. You're so huge and your inventory is so large that it becomes impossible to manage. And I have, there have been news around that there were huge operational problems within Airlift. There was a loss of money due to expiry. Obviously, cheezein expire hoti hain. You have to, you take that as a hit. There were mismanagement of what stock was to order, the forecasting problems in stock. Anyone who works in, this industry should know that, when you're forecasting what to buy, it's done very carefully, that you analyze what you need to have to fulfill certain orders. And if you buy something that you do not need, that stuff eventually becomes dead stock and you're stuck with it and you can't sell it. And I believe for a lot of these electronic items that Airlift had, they were just items that were not, that people wouldn't generally buy through quick commerce. And so yeah, there was, I'm definitely sure there was a lot of dead stock issue there, and expiry, of course. And even though they had centralized warehouses and then these dark stores around that centralized warehouse, it's still a scale, a magnitude that I can only imagine how complex that must have been and how much money they might have lost for mismanagement of operations. But now, in सारे reasons की वजह से, whether it's the problem with the cash burning model, whether it's the fact that they weren't self-reliant, whether it's the fact that their runway dried out, whether it's the fact that certain investors backed out of deals, or whether it's operational issues and the scale and magnitude of it, all of these reasons resulted to the ultimate demise of Airlift. But at the same time, it's important to note कि सारा कुछ internal problems की वजह से नहीं है. In this year, in the third quarter of 2022, saw 69% less investment into startups in Pakistan as compared to last year. बल्कि एक साल में, इसी quarter में, पिछले साल 2021 में, there was 69% less investments this year, which shows कि एक change आ रहा है. Investors इस तरह early stage startups में invest अब नहीं कर ले जिस तरह पहले कर रहे थे. लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है. Globally, you have a 52% decrease year on year on early stage startups. Investors are now focused more on Series B, Series C, मतलब late stage startups जो के कुछ development कर गए हैं. And इसमें इंटरनेशनल रीज़न भी हुआ, हमारा लोकल रीज़न भी हुआ कि हमारे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में चल रही है, हमारा फ्लड्स का प्रॉब्लम, हमारे स्टार्टअप्स का एक जनरल दिस आइडिया ऑफ हाई कैश बर्न, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर स्लाइटली मोर कंसर्न्ड विद इन्वेस्टिंग इनटू पाकिस्तान. बट एट द सेम टाइम, द कंपनी दैट led the largest investment in Airlift still says that Pakistan is a prime market for any investor because of the sheer potential that this market holds. हमारी दिन ब दिन जो है टेक और मतलब टेक अडॉप्शन रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, एजुकेशन रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं. एक रिक्शे वाला भी है, वो भी आज बैठ के अपने फ़ोन पे ऊबर की ऐप चला रहा है, या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड भी जो है उसके हाथ में भी स्मार्टफोन है और वो टिकटॉक देख रहा है. बट द पॉइंट बिकम्स दैट यू हैव अ पॉपुलेशन दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स मोर टेक अडॉप्शन, and there aren't enough solutions in the market to cater to them. In many industries, quick commerce being one of them, fintech is seeing a lot of investment this year. जिसमें अभी हमारा सदा पे, नया पे, and there are a couple of more coming in this industry in the next coming months. And तो Pakistan is still ripe for new innovative startups and more increased investment from investors, not only in Pakistan but outside Pakistan as well. Internally तो investments हमारे बहुत सारी bodies हैं जो internally पाकिस्तान के अंदर ही startups में invest करती हैं, but international focus पाकिस्तान पे अभी भी है despite the global problems and our inflation and our political instability. So where does that leave us? At the end of the day, इस सारी कहानी से Airlift की, इससे मुझे आपको क्या सीखने को मिलता है और हम अब क्या करें? तो करें तो ये कि जो लोग भी इस वक्त कॉर्पोरेट जॉब्स या फिर कोई भी काम कर रहे हैं या फिर एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, यू नीड टू वर्क एट अ स्टार्टअप एटलीस्ट वंस, चाहे वो कुछ महीनों के लिए ही क्यों ना हो, चाहे वो एज लॉन्ग एज अ कपल ऑफ ईयर्स ही क्यों ना हो. एंड आई टेल यू व्हाई. बिकॉज स्टार्टअप्स का जो स्केल और स्पीड होती है, it is unparalleled. Airlift की मिसाल ले लें, मतलब कि साल के अंदर अंदर they went from nothing to dozens of stores
all across the country and the world. ये speed अपने साथ बहुत ज़्यादा learning opportunities लेकर आती है कि आप जो चीज़ें in a corporate environment या फिर कोई भी किस्म की जॉब में आप 5 साल में सीखते हो, एक स्टार्टअप में आप 6 महीने में सीख सकते हो. So that's number one, speed. दूसरी बात ये स्टार्टअप में काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट कि there are no, at least as far as I've seen, the hierarchy and the departmental lines are always blurred. Now, some people do not like the statement of one person wearing multiple hats, but it is true. In a startup, you do not have very strict boundaries of what someone has to do or what their responsibilities are. You can do anything. आप मार्केटिंग में गए हो, आप ऑपरेशंस को देख सकते हो, आप ऑपरेशंस के अंदर कोई इंप्रूवमेंट लाके रेकमेंड करते हो. जनरली स्टार्टअप्स रियली लव दैट एंड so there's this room to experiment and grow, and I know for a fact that anyone who lost their job at Airlift will never say कि यार हम गलत डिसीजन से Airlift में गए थे. Yes, जब उनका टर्मिनेशन हुई या कंपनी बंद हुई, they were given 2 months salaries and they were asked कि you need to find other jobs. But क्योंकि उन पे Airlift का ठप्पा लग चुका था कि वो इतने स्केल और स्पीड और एक हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप से आए थे, the entire startup ecosystem of Pakistan supported the people. They were recommending people. I remember I came across a lot of CVs from people who had been laid off at Airlift, and उनके Airlift के अपनी टीम जो है बोल रही थी यार कि ये 50-100 बंदे हैं हमारे, इनको हायर करना है. And everyone was looking at that list जो किसी ने बनाई थी कि कौन कौन से बंदे हैं, उनकी क्या क्या रोल्स हैं, और इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए. मैंने खुद इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए of people who had been in Airlift, and they all came with such a professional and such a high skill set that it was incredible. So even though I understand that people don't work at startups because there's a risk factor, कि यार does it work out, do we get paid, do we get our salaries, do we get any kind of return or stability in our lives. यार एक दफ़ा करो. Risk is inherent in life, and if you want to learn big or make it big actually, तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा. And more than the money of it, the money does not mean everything. It does obviously mean a lot in today's world कि यार पैसे नहीं होते तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, घर नहीं चलता. लेकिन depending on what stage you are in your life, I would recommend that everyone needs to work at a startup at least once for at least a little amount of time. Secondly, वो लोग जो इस सारी चीज़ को, इस सारे डिक्लाइन और क्लोजिंग स्टार्टअप्स को देख के डिस्करेज हो रहे हैं फ्रॉम देयर ओन स्टार्टअप्स, आई वुड से कि यस, इस वक्त स्टार्टअप्स मुश्किल है, लेकिन what do you need to do if you want to run a successful startup and gain investor traction? Let's say you have an idea, an amazing idea in your head. You start off and you have this old approach of cash burn. मैं कहते हैं कि यार मैं कैश मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड रेस किया और मैंने ये मतलब एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी मैंने बर्न करना है 6 महीने में, उसके बाद मैंने दोबारा इन्वेस्टमेंट रेस करनी है. दैट इज़ प्रॉबली नॉट गोना वर्क आउट फॉर एनीवन इन पाकिस्तान नाउ. इट्स गोना बी एक्सट्रीमली रेयर इफ दैट वर्क्स आउट. The only thing you need is to establish slight traction in your business and slight profitability. 6 महीने आप अपने operations run करें, customers gain करें, हर customer को delight करें. 100 customer ही क्यों ना हो, 1000 customer ही क्यों ना हो, पहले 6 महीने में गोल होना चाहिए कि यार मैंने कितने customers acquire करने हैं at the lowest cost possible. आपने वो कस्टमर्स एक्वायर किए, थोड़ा सा अपना पॉजिटिव फ्लो बना लिया, एंड आई कैन गारंटी दैट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, एंड इवन इफ देयर आर इन्वेस्टर्स हु, इफ आई एम लकी दैट इफ सम इन्वेस्टर्स आर वाचिंग दिस, दे विल अटेस्ट टू द फैक्ट कि इफ यू शो स्लाइट ट्रैक्शन, वेरी स्लाइट पॉजिटिव कैश फ्लो एंड सेल्फ रिलायंस एंड एन इनोवेटिव आइडिया जिसकी डिमांड आप प्रूव कर सकते हैं, no investor in their right mind would say no to your startup. So yes, keep working on your startup ideas, work at a startup to learn important things, and take these stories like Airlift as, like I took it as an incredible motivation booster that, you know, if someone comes out of nowhere and builds a company that raises $109 million in a matter of years, then that's where you can theoretically be in a couple of years. All you need is the right idea, the right execution, and the willpower to see it through. And with that, thank you very much for watching SohaibTalks 2, and I'll see you guys in the next one. Allah Hafiz.